Hello everyone. Motivational factors video lesson 5th. Now let's talk about content for the course, which is ecotourism and its principle, measurement criteria of rural tourism, motivational factors, ecotourist motivational factors, and Jawara tribes of Andaman Island. What this course would include total 20 video lessons. Now, the content for the session 5th will be first, introduction to motivational factor for rural tourism, meaning of motive, pull and push factors, and motivational factors such as intellectual motive, social motive, competence and mastery motive, and avoidance motive. Now, in this PPT, you can see that what come into our introduction to motivational factor. First one is meaning of motivational factor for rural tourism. Second, information about motive, that is pull and push factor. And the third one is factor determine motivational for rural tourism. So now let's talk about what do you mean by motivational factors and the definition for motivational factors. According to Solomon 2015, it defined that motivation as an internal force that stimulates people into the action which will enable to fulfill their needs or desire. According to him, human behavior is based on motivation and can be controlled by motivation as well. Thereby, motivation is defined as a pull factor which activity human behavior and it defines the direction. As a result, the internal psychological factor stimulates human into and actions to satisfy the inner tension. In this case, the motivation can be considered as the inspiration to satisfy needs. Now, let's talk about introduction to motive. When it comes to motivational studies, the term motive is also frequently used. Sometimes it is considered as a synonym of motivation, as both these terms mean incentive and drive. Thereby, in some cases, their two terms are used as interchangeably. Nevertheless, Genote 1997 conclude that motive differ from motivation. He highlights that each motive has its different instinct, type of content in the form of goal of behavior, but motivationals contain result of situation per interaction. Thus, motivation should be considered as wider and deeper phenomenon than motive. As it seems from the above, motivational determines human behavior, preference and decision to do or not to do something. In the tourism field, motivation become an important factor to study. What is a tourist motivation? So it also defined as it as an integrated network of biological and cultural forces which influence the travel choices, behavior and experience as well. It also argues that understanding of tourist motivation can be offer a range of insight into why people are involved in recreation activity. But they also highlight that it is important to understand not only why people are involved in tourism activities, but also which factor can be inhibited them from participating. This denote and emphasizes that tourists are driven by motivational while deciding which type of holiday to choose and which destination to visit. According to another study, it can be defined as a set of needs that driven as a person to participate in a tourist activity. Thus, tourist motivation describe the reason which stimulates people to travel
and explain their behavior while organization and participating in the trip as well. Now, let's talk about list of tourist motive. Before we going to the list of the tourist motive, let us talk about number of research place that we call as need as an internal force or motivation. The following research outlined four categories of motivator, that is physical, cultural, personal, and status and prestige also. It signed out that such categories of tourist motivation as social motivator. Later on, it can be also completed this list by emotional and personal development motivators also. So, come to the our point, list of tourist motive, bringing all the categories together, and the list of tourist motive consists of following motives. The first one is physical motive is the need to certain actions and relaxations. Second, personal motivation is the need to fulfill personal dreams, desires or wishes including visiting relative and friend as well. Personal development motive might be the need to increase knowledge. Fourth, emotion motive is based on emotional connection with the certain place or people which drive people to travel. For example, nostalgia for a certain places. Sixth, social motive include personal goal to interaction with other people, including need to find new friends. Seventh, status or prestige motive include desire to obtain something exclusive and fashionable as well. And the eighth and the last one is cultural motivation is the interest to discover new culture. In some studies, even more gradation has been used. They purpose 10 trends to describe tourism motivational factors. As a rule, tourists are motivated by one or these motivates or by several motives together. But according to some researcher, there is a group of tourists who gave great need for power and uniqueness. They are motivated to get unique experience which is inaccessible for all the visitors. While separating themselves from another tourist, they satisfy their need. Now come to the factors. There are two types of factor, which is first is push factor and the second one is pull factors. Despite tourist motivation is considered as an internal force while which drives people to certain action. The study of motivation traditionally falls with push, that is internal, and pull, that is external motivation and motivating dimensions, with the former being the prevailing focus for the tourism motivation research. The internal factor referred to such driven as a result desire to rest, experience and enjoyable nature environment, pursue one interest or steady healthy, while external relate to destination properties, its feature, for example visual or cultural activeness of the place. Thus push factor are those such factors which pushes a person to a decision to travel, and the pull factor are those that define which destination to choose. Although push and pull motivator can be studied separately, it is not uncommon to perceive tourist motivation as a function of these two. Such approach creates beneficial and easy to use tool in uncovering motivations of tourist behavior. Apart from push and pull factor, there is another approach to consider while tourist motivation using laser motivational scale. This is the motivational scale with the purpose to describe the motive that determines whether satisfaction is gained from the laser pursuit. According to laser motivation scale,
there are four motives that determines tourist satisfaction, in which the first one is intellectual motive. As you all can see, what is intellectual motive? It means the access to the extent to which individuals are motivated to engage in leisure activity which involves mental activity such as learning, exploring, discovering, thoughts or imagining as well. In another word, we can also say that this motive defines to what extent tourist is motivated by need to learn something. Now, let's talk about our second motive, which is our social motive. It means to assess the extent to which individuals are motivated to travel, but because of a need for communication with other people as well. This motive consists of two basic needs, the need for friendship and interpersonal relationship as well. Also, it referred to need of a belonging to social group and eco-satisfaction through getting respect from other that we call as FAN 2010. Now, let's talk or come to our third one, which is competence and a mastery motive. In this motive, the extent to which individuals are motivated because of need to a master, challenge or to compete it. Now, we come to our fourth one, which is avoidance motive. In this avoidance motive, it assesses the drive to escape and get away from overstimulating life situation. It is the need for some individual to avoid social contact, to seek solitude and a calm condition. And for others, it is to seek to rest and to unwind themselves. गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सिखों के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। पटियाला के उत्तर में स्थित यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिखों के लिए इसका महत्व इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बेटों को सरहंद के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। उनका शहीदी दिवस आज भी यहाँ लोग पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यहाँ पर उस ऊंचे स्थान को भी देखा जा सकता है जहाँ वे खड़े हुए थे और उस स्थान को भी जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। शहीदी जोड़ मेला यहाँ मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। यह दिसंबर के चौथे सप्ताह में शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। यह मेला गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिनका अंतिम संस्कार फतेहगढ़ साहिब में ही किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनके छोटे साहिबजादों को इस्लाम धर्म न अपनाने के लिए जिंदा चुनवा दिया गया था। बड़ी संख्या में भक्त इस मेले में हिस्सा लेते हैं। खास बाग जनता और सम्राट शाहजहां के विशेष उपयोग के लिए भी बनाया गया था। जब शाहजहां अपनी बेगम के साथ लाहौर आते जाते थे, तब वे यहाँ आराम करते थे। मुगल बादशाहों को आरामदायक रहने के लिए पर्याप्त संख्या में महल थे। महलों के अवशेषों की बारीकी की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि महलों में एयर कंडीशनिंग की एक उत्तम व्यवस्था थी और स्मारक को सर्द खाना भी कहा जाता है। अन्य स्मारकों में शीश महल, हमाम और टैंक शामिल हैं। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब 12 अगस्त 1953 में सरदार हरभजन सिंह और सरदार गुरदेव सिंह वासी मंडियाला कलां दोनों अपने खेत में हल चला रहे थे।
हल चलाते समय उनका फाला मंजी साहब में 2-3 बार लगा। ये वो स्थान था जहाँ पर 6वीं पातशाही श्री हरगोबिंद साहिब जी का आसन था। 14 अगस्त से सभी संगतों को इस स्थान के बारे में पता चला तो वह दूर दूर से दर्शन करने के लिए आने लगे। मेरा नाम यास्मीन है। मैं आज यहाँ पे भगवान महावीर वनस्थली तीर्थ स्थान जो है यहाँ पे आई थी और यहाँ आके मुझे पता चला कि भगवान महावीर जो है उनकी एक यहाँ पे मूर्ति की क्रेविंग की हुई है और ये जो मूर्ति है ये एक पिंक स्टोन से पूरी मूर्ति एक ही स्टोन में से निकाली गई है और जिसको देख के मुझे मतलब हमारे भारत के जो स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं उनके प्रति मेरी सद्भावना बहुत ज़्यादा बढ़ी है और यहाँ आके मुझे भगवान महावीर की थोड़ी शिक्षाओं के बारे में भी पता चला जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग यहाँ पे आएँ और ज़्यादा उनको भी इन बातों के बारे में सीखने को मिले। चैत महीने में 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जसड़ा डढ़ेड़ी की ढाब पर स्थित एक स्थान पर 40 दिन रुके। एक लोहार जानकी दास जिन्होंने गुरुजी के पुराने शस्त्रों की मरम्मत की और उन्हें कुछ नए भी बना कर दिए। गुरुजी ने खुश होकर ये वर दिया कि ये धरती दूर से लोहा खींच कर लाएगी और उनके नाम पर शहर मंडी गोबिंदगढ़ सुशोभित हुआ। हवेली टोडरमल, जिसे जहाज हवेली या जहाज महल के नाम से जाना जाता है, टोडरमल का 17वीं शताब्दी का आवास है
जो मुगल साम्राज्य के तहत सरहंद के गवर्नर नवाब वजीर खां के दरबार में दीवान बने थे। आज इसे गुरु गोबिंद सिंह के युवा शहीद पुत्रों और उनकी मां के दाह संस्कार के लिए याद किया जाता है। टोडरमल ने 1704 ईस्वी में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के युवा पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने के लिए सरहंद के गवर्नर वजीर खान को भारी कीमत चुकाकर अपने परिवार का सोना दान कर दिया। उसे जमीन खरीदने के लिए सोने की मोहरों को लंबवत रखने के लिए कहा गया था और उसे केवल उतनी ही जमीन दी गई थी जिसे वह सोने की मोहरों से ढक सके। बाद में उन्होंने उनके दाह संस्कार की भी व्यवस्था की और फतेहगढ़ साहिब में दाह संस्कार स्थल पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बनवाया था। मेरा नाम हरजोत सिंह है। आज मैं दीवान टोडरमल जी की हवेली में आया था। ये उनकी पुरानी हवेली है। इन्होंने श्री गुरु गोबिंद साहब जी के छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी के अंतिम संस्कार के लिए सोने की मोहरों को खड़ा कर जो कि आजकल ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा नाम से जगह स्थित है उसको खरीदा था। आजकल के समय में रूरल टूरिज्म एक महत्वपूर्ण इशू है जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर समाज को प्रभावित करता है। MGNCRE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अधीन हमारे गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज अलौर खन्ना में REDC और SES REC सेल चल रहे हैं। हमारी सूझबूझ और कर्मठ प्रिंसिपल डॉक्टर नीरजा सेठ पजनी की अगुवाई में हमारे प्रोफेसर भारत भूषण जी और हमारे स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस वीडियो द्वारा हम
उन कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे रूरल टूरिज्म को प्रफुल्लित करने में सहायक होते हैं। ग्रामीण पर्यटन स्थल हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कृति व भारतीय सभ्यताओं को जिंदा रखने के लिए युवाओं को चाहिए कि वह अपने आसपास के सभी ऐतिहासिक क्षेत्रों का दौरा अवश्य करें। मैं बधाई देना चाहती हूँ सभी छात्रों को जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों का गूढ़ अध्ययन किया, परंपराओं रीति रिवाजों को महसूस किया व बलिदान व देश सेवा की जुड़ी हुई भावनाओं को हम तक पहुंचाकर मिट्टी से जुड़ने की प्रेरणा दी। ये स्थल पूजनीय है व हमारे उज्जवल भविष्य की नींव है। अतिथि देवो भव व वसुदेव कुटुंबकम की ओर अग्रसर कर ये हमने शुद्धता पावनता का संचार करते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन की सभी परेशानियों को पार करने की कला सीखना चाहता है, वह खुद में सकारात्मकता का संचार करना चाहता है, वह इन पवित्र स्थलों का भ्रमण अवश्य करे। धन्यवाद।